Good afternoon, students. So, yesterday we have completed the topic opposite words. So, today we will continue with the new topic, that is rhyming words. So, for that, first let's write the definition for rhyming words. What are rhyming words? So, the question says, what are rhyming words? Okay. So, first, let us first write the answer for rhyming words. After that, I'll explain it to you clearly. Okay. So, let's write. What are rhyming words? Rhyming words are the words that rhyming words का मतलब क्या है? Rhyming words are the words that have the same ending sound. क्या होता है rhyming words का? Ending sound क्या होता है? Same होता है. Understood? The words that have the same endings and the same sounds are known as rhyming words. Okay? उसका मतलब क्या है? एक वर्ड जो कि एंडिंग जो लेटर्स होता है उसका सेम है और उसका साउंड सेम है, तो उस वर्ड को हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं. ओके. सो यू ऑल हैव टू राइट द डेफिनेशन फॉर राइमिंग वर्ड्स इन योर कॉपी, इंग्लिश कॉपी. ओके. सो राइट इट डाउन. Yes, Pradeep. Sorry, write it down in a copy. The definition for rhyming words. After that, we'll write few points for rhyming words. Okay. Or else you can take a screenshot as well. You can copy it later. Okay. Because we are very less amount of time. So let's write a few points for rhyming words. The number one point, the first point will be. When we listen carefully, rhyming words sounds alike. At the end. Even
they start with different letters. Okay, so first let me explain to you what the first point says. The first point says when we listen carefully, rhyming words sounds alike at the end even if they start with different letters. इसका मतलब क्या है? Rhyming words sounds alike at the end. Okay, the rhyming words का ending क्या होता है? Same होता है even if they start with different letters. For example, cat. C-A-T, cat. The rhyming word for cat will be bat. Okay. So here, what? इसमें क्या same है? इन दोनों words में what is same and what is different? Here, the endings are same. Okay. But the thing is, the first letter is different. So, the first point is says that when we listen carefully, listen, cat, bat. Carefully, rhyming words sounds alike at the end even if they start with different letters. इसका मतलब क्या है? Rhyming words, ये दो क्या है? Rhyming words sounds alike. Sounds alike का मतलब एक ही जैसा sound होता है. It sounds alike at the end even if they start with different letters. As you can see, I have written two words here. Two words. They start with two different letters. But the thing is, their endings are same. Okay? Ending क्या है? Same way. इसीलिए ये दोनों क्या है? These two are the rhyming words. Okay? So let us try the second point for rhyming words. The second point will be, are you all clear with the concept? Do you have any question? Then you can ask me in the comment below, okay? The second important point is rhyming. Rhyming words do not need to look same. Rhyming words do not need to look the same. But they need to sound the same at the end. Okay. I hope आप सभी को समझ में आ रहा होगा राइटिंग, राइट? Are you clear? ये राइटिंग समझ में आ रहा है ना आपको? Do you have any difficulties? And please do let me know, okay? So the second point says, the first point हमको समझ में आ गया, right? Now the second point says, rhyming words do not need to look the same, but they need to sound the same at the end. Okay? Rhyming words को एक जैसा दिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है उसमें sound at the end, they have to be the same. Okay? For example, here I'll write P-E-N, pen. Okay, pen is a word. Now do you have any guesses? What will be the rhyming word for pen? Please write it down in the comment. Pratik, Shaurya, tell me the answer. What will be the rhyming word for
Right fast. Yes. 10. Very good. Pen, hen, 10. Very good, Pratik. The rhyming word for pen will be 10. It could be hen, it could be men, whatever. But you should be careful that their ending should be same. Okay. खाली आगे का word जो है वो different होता है. आगे का letter जो है वो different होता है. But क्या होता है पीछे का दोनों word क्या होता है rhyming words में same होता है. Okay. The endings are same. So the second point says rhyming words do not need to look the same. They need to sound the same at the end. As you can see that both the endings are same and they sound alike. Pen, 10. Only difference here is the first two letters. Okay. And the last point will be the ending sound is the same. Read the sentence carefully and the third point says when we say this word aloud, the ending sound is the same, so they rhyme. हम जब ये word बोलते हैं या कहते हैं तब क्या होता है? The ending sound will be same. That is why they are called rhyming words. Okay. So let us write one or two examples. You don't need to write this example. Okay, you don't have to write this example. I'll give you another thing to Monday to write. Okay. ये सब लिखना नहीं है, खाली ये points लिखना है कॉपी में, ठीक है? You don't have to write the example. Pen, pen, 10. And then second example is big and dig
The last example will be now look at this example carefully. इसमें क्या हुआ है? What I have done is here you can see the endings are all the three words have the same ending. And in the second example also, all the three words have the same. All the three words have the same ending. Okay, and at the last example also the endings are same. इसमें क्या चेंज हुआ है देखिए तो only the first letters, the starting letters are different but their endings are same. endings क्या होता है? same होता है. सब में देखिए endings क्या है? same है. okay, and their sounds are also same. The sounds are also alike. So the sounds are also same. when we say rhyming words, for example, pen, hen, ten, the sounds alike, but the thing is their starting letters are different. Okay, so these all are the examples for rhyming words. So let us continue with this topic tomorrow because we are running out of time. So get ready for your EVS class. Okay, so not tomorrow, Monday. We'll continue with the same topic Monday. I hope you have understood what rhyming words are. You can take a screenshot of this. Okay, thank you. Good afternoon everyone. So now this is your EVS class. Okay, so take out your EVS copy everyone. Okay, so today we are going to learn about the people who help us every day. Okay, people who help us. Okay, so today we are going to learn about people who help us. People who help us. This is the topic for our today's class. Okay, like we cannot do everything by ourselves, right? हम सब काम हम खुद नहीं कर सकते, right? So there are people who help us in a different ways, like to make our life easy, है ना? ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जिसका काम क्या है, जो डिफरेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ क्या होता है, आसान हो जाता है, राइट? हम सब कुछ अकेले खुद नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम बीमार हो गए तो हम खुद को ट्रीट नहीं कर सकते, राइट? अगर लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पाइप में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो प्लम्बिंग हम खुद नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए कौन है? उसके लिए प्लम्बर्स होते हैं, राइट? प्लम्बर्स आके रिपेयर्स करते हैं, राइट? अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम
डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल, है ना? तो ऐसे ही हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं, राइट? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द पीपल हु हेल्प अस, ठीक है? जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं, ठीक है? सो ऐसे ओके, सो what's this doctor, right? First we will write the name and then we will discuss it one by one, ठीक है? वो हमें किस चीज पे हेल्प करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे one by one. First is doctor, second is plumber, right? Plumber, right? Greengrocer, and then comes teacher, and then comes postman, policeman, right? Gardener, carpenter, and who else are there? Guard, watchman, right? Tailor, right? So these are all the people. With the help of them, our life has become so much easier, right? हमारा लाइफ क्या हो गया है? बहुत आसान हो गया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट? जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? सो डॉक्टर ट्रीट्स अस, राइट? हम जब भी बीमार पड़ते हैं, अगर कोई सा भी कट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे बॉडी में, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास, राइट? सो द पीपल हु ट्रीट अस इज कॉल्ड डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो हमें ट्रीट करता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं डॉक्टर. नेक्स्ट इज प्लम्बर. नेक्स्ट क्या है? प्लम्बर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब भी घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो पाइप का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके बाथरूम में पाइप लीकेज हो रहा है, राइट? पाइप क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है, वहां से पानी आ रहा है, राइट? तो क्या करेंगे? हम किसको बुलाएंगे? प्लम्बर को बुलाएंगे, क्योंकि प्लम्बर रिपेयर्स पाइप्स, ठीक है? प्लम्बर क्या करता है? पाइप्स को सब क्या करता है? रिपेयर्स करता है, ठीक है? तो जब भी कहीं पे भी पानी वगैरह हो गया, लीकेज हो रहा है, राइट? आपके वॉश बेसिन के अंदर से क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है, बाथरूम में कोई पानी का प्रॉब्लम है, पाइप का प्रॉब्लम है, तब हम खुद कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए कौन है? प्लम्बर है, ठीक है? प्लम्बर क्या करते हैं? प्लम्बर रिपेयर्स द पाइप्स, ओके? पीपल हु रिपेयर पाइप्स आर कॉल्ड प्लम्बर, ओके? People who repairs pipes and are called plumber. Wait, first was doctor, right? Doctor. A doctor looks after the sick and ill people. Okay? Doctor looks after sick and ill people. जो भी बीमार लोग होते हैं उनको कौन देखते हैं? डॉक्टर, राइट? नाउ द सेकंड वन वाज क्या था? फर्स्ट वन वाज डॉक्टर, डॉक्टर के बारे में पढ़ा. सेकंड वन इज प्लम्बर, ओके? क्या है? प्लम्बर. प्लम्बर किसको बोलते हैं? प्लम्बर उन लोगों को बोलते हैं जो पाइप एंड टैप क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, ठीक है? सो पीपल, प्लम्बर हु रिपेयर
करते हैं, वेजिटेबल्स सेल करते, बेचते, ठीक है। So green grocers are those who sells fruits and vegetables. Who sells fruits and vegetables. उन लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। उन लोगों को क्या बोलते हैं, जो लोग आप दुकान में गए होंगे, राइट, दुकान में क्या क्या रखा होता है, फ्रूट्स रखा होता है, वेजिटेबल्स रखा होता है, राइट। मार्केट में अगर आप जाओगे, आपकी मम्मी के साथ गया होगा, राइट, जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आप क्या देखोगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे बेच रहे होंगे, राइट। सो जो पर्सन क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, वो बेचते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। उन लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। वो लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको खा पा रहे हैं, राइट। अगर ग्रीन ग्रोसर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल नहीं करते, बेचते नहीं, तो हम लोग उसको खा पाते हैं नहीं, मार्केट में नहीं मिलता, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रीन ग्रोसर हेल्प्स अस, राइट। ऐसे हमें ग्रीन ग्रोसर क्या करेगा, हेल्प करेगा किस चीज में, वेजिटेबल्स खाने में, फ्रूट्स खाने में, राइट। सो द पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। ये आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि ग्रीन ग्रोसर किसको बोलते हैं, ठीक है। सो पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड ग्रीन ग्रोसर। वैसे ही प्लम्बर किसको बोलते हैं, पर्सन हु रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स इज कॉल्ड प्लम्बर, ठीक है। Now next क्या है, टीचर, राइट। क्या है, टीचर। टीचर कैसे हेल्प करते हैं, what do teacher do, teacher teach us, right, teacher टीचर कैसे हेल्प करते हैं, जब भी आप स्कूल में जाओगे, राइट, टीचर नहीं होगा तो आप लोग क्या पढ़ पाते, विल यू ऑल बी एबल टू गेट अ गुड एजुकेशन, नो, राइट। सो टीचर किससे कैसे हेल्प करते हैं हमको, टीचर टीचेस अस, राइट। जितना भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, राइट। इसलिए आप लोग क्या कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, राइट। अगर सिर्फ स्कूल होता, स्कूल के अंदर टीचर नहीं होते तो क्या करते, आप पढ़ पाते नहीं, राइट। सो टीचर टीचेस अस, राइट। टीचर भी एक ऐसा पर्सन है जो हमें हेल्प करते हैं, राइट। हम भी गए थे स्कूल, हमारा भी टीचर था जिसने हमको पढ़ाया, राइट। अभी हम यहाँ पे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, राइट। दिस इज हाउ टीचर हेल्प अस। हम सब लोगों के लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई काम करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, राइट। ऐसे नहीं है कि आप बिना स्कूल गए पढ़े होंगे, राइट, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या है, स्कूल जाना जरूरी है। स्कूल में कौन होते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर होते हैं, राइट। अगर टीचर ही नहीं होता तो आप लोग पढ़ नहीं पाते, है ना। सो दिस इज हाउ टीचर हेल्प अस, राइट। अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो लाइफ में क्या होगा, कुछ नहीं कर पाते, राइट। नेक्स्ट क्या है, पोस्टमैन। क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन किसको बोलते हैं, पता है आप लोगों को, पोस्टमैन, पोस्टमैन किसको बोलते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। क्या करते हैं, पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर, ठीक है। पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से क्या करते हैं, लेटर्स लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने कोई भी सामान मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से मैंने क्या किया, पोस्ट किया, तो वो सामान कौन लेकर आएगा घर तक, वो सामान लेकर आएगा पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से घर तक सामान लेने के लिए कौन है, पोस्टमैन है। सो द पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर इज कॉल्ड पोस्टमैन, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, पोस्टमैन बोलते हैं,
जैसे a person who teaches us is called a teacher, likewise a person who brings our letter is called postman. Okay, क्या बोलते हैं उनको? Postman. Now next is policeman. Next क्या है? Policeman. पुलिसमैन का काम क्या है? पुलिसमैन क्या करते हैं? और पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी. क्या करते हैं? पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी. ठीक है, पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी. ठीक है, अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए घर पे क्या हो गया, चोरी हो गया, रॉबर आ गया, थीफ आ गया, तो किसके पास जाते हैं हम जाते हैं पुलिस के पास, राइट. सो पुलिस क्या करते हैं? हमारे सेफ्टी करते हैं. हमको क्या रखने के लिए? सेफ रखने के लिए कौन है? पुलिसमैन है, राइट. पुलिसमैन लुक्स आफ्टर आवर सेफ्टी. अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हमको, तो हम कहाँ पे जाते हैं? पुलिसमैन के लिए जाते हैं. प्रॉब्लम्स लाइक अगर घर पे थीफ हो गया, चोरी हो गया, राइट, कोई आ गया, तो कहाँ जाते हैं हम? पुलिसमैन के पास जाते हैं. ठीक है, so these are all the names of the people who helps us in our day-to-day life. Okay, with the help of whom our life has been so much easier, right? As we know, we cannot do everything by ourselves, right? हम सब काम हम खुद नहीं कर सकते, तो एक काम के लिए. So these are the people who are there to help us in our daily life. Okay, so with this we have come to the end of our today's class. We will continue it tomorrow. Okay, so thank you everyone.